So the 2023 Tata Nexon Facelift is finally here. The car has been launched at quite an attractive starting price of 8,10,000 rupees, and by facelift standards, quite an evolution. Yes, looks की बात करें तो पहले से काफ़ी ज़्यादा evolved है. The front of the car looks quite futuristic. You have the black applique running the width of the face here, and स्प्लिट हेडलाइट्स में आपको DRLs एरो ट्रीटमेंट में अब यहाँ पर ऊपर मिलते हैं, एंड यू हैव द हेडलाइट्स below on the bumper, integrated quite nicely, and quite like the paint scheme here on the car. Again, the front looks quite imposing and quite quirky as well. So the typical quirks we have always seen on Tata Nexon is carried over to the facelift as well. यहाँ पर bumper में you have a different mesh for the air dam. You have a camera here, so 360 camera view आपको यहाँ पर मिलता है, and quite sleek bash plate again. So in terms of looks, the front end again has that muscular SUV-ish appeal to it. Looks very nice. The hood line again is tapering but quite pronounced. The lines, the character lines बहुत ज़्यादा sharp नहीं है, but again the bulges are quite bold. So again goes with that SUV flair the SUV has. अगर मैं प्रोफाइल की तरफ आऊँ, then it has the typical silhouette, retains the silhouette, but again in terms of elements is quite evolved. काफ़ी चंकी से यहाँ पर आपको फेंडर्स मिलेंगे. व्हील आर्चेस इसके काफ़ी बोल्ड हैं, एंड यू हैव 16 इंचेस ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स. ये काफ़ी ईवीश टाइप का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. एरो डिज़ाइन है, बट अगेन लुक्स क्वाइट कूल विद द ओवरऑल अपील ऑफ द कार, एंड चंकी प्रोफाइल इन द टायर्स तो फिल्स द व्हील वेल्स क्वाइट वेल. ये ओवरऑल देखने में काफ़ी स्पोर्टी एक स्टैंस देती है. साइड में आई एम ग्लैड कि द वाइट ट्रीटमेंट नाउ हैज़ बीन रिप्लेस्ड with these piano black highlights on the window line. Again looks quite nice, and इसका जो overall appeal है, ये जो पहले आपको cladding black में मिलती थी, अब ये body color में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. And similar door handles, tapering roof line again finished in black, so dual tone treatment आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. Goes with the sporty appeal the car has, और पीछे के साइड में blends quite beautifully onto the rear. In fact, ये जो पूरा segment है of the quarter panel that extends to the rear of the car looks very nice to me, and you have the connected tail light setup. काफ़ी sleek ये design है. You have the light running the width of the rear, and elongated Nexon badging यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. Very neatly segmented boot gate you have right here. Character lines जो है, I like that they are not very sharp, not too much pronounced, क्योंकि वो जो SUV का bold एक design element है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, and that is something which buyers quite like. नीचे you have that similar chunky cladding. यहाँ पर बम्पर पे नीचे सिल्वर डैश प्लेट ये जो इंटीग्रेट किया गया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से. पीछे भी आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, सो 360 डिग्री व्यू के लिए ये 4 कैमराज, पहले आगे जो हमने दिखा है, फिर पीछे यहाँ रियर में, एंड साइड में ORVMs पर भी आपको कैमरे देखने के लिए मिलते हैं. टेल लाइट्स नीचे आपको यहाँ पर रिवर्स लाइट रिफ्लेक्टर्स इंटीग्रेट किए मिलते हैं, एंड द बॉडी कलर ट्रीटमेंट एक्सटेंड्स हियर टू द साइड ऑफ द कार एज वेल. सो ओवरऑल काफ़ी फंकी, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन है. आई लाइक द क्वर्की एलिमेंट्स. सिल्वर रूफ फ्रिल्स अगेन enhance that SUV appeal of the car, and overall in terms of design I think it is a very good evolution. Now अब बात करते हैं अंदर में गाड़ी कैसे दिखती है. Now if you like the exterior of the new Tata Nexon Facelift, interior में आपको और भी बड़ा evolution देखने के लिए मिलेगा, because in terms of feel and appeal looks quite contemporary, very modern, and thanks to all the new elements we see here, especially ये जो नया कलर स्कीम है, आपके पास वो जो कन्वेंशनल कलर स्कीम था वो अब देखने के लिए नहीं मिलता है. दैट इज़ रिप्लेस्ड विद दिस ब्लू हाइलाइट्स ऑन द सीट्स. ब्लैक एंड ब्लू का ओवरऑल ट्रीटमेंट आपको मिलता है, ड्यूअल टोन है, एंड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ये कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश भी आपको इंसर्ट्स मिलते हैं डैशबोर्ड पे. अगेन लुक्स क्वाइट नाइस, एंड द पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट कंटिन्यूज ऑन द सेंट्रल कंसोल एज वेल. सो यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की जो स्क्रीन है, यहाँ पर आपको एयर कॉन्वेंट्स के लिए कंट्रोल मिलते हैं. ये पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया. What I like is that you still have toggle like physical buttons for that easy access of AC controls. बाकी कंट्रोल्स आपको ये स्क्रीन पे ही मिलते हैं, एंड जो ट्रेडिशनल गियर लेवल था इन द ऑटोमेटिक वेरिएंट दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दिस क्वाइट कूल स्टवी लाइक गियर लेवर. सो ये हमने लग्जरी कार में JLRs में देखा है, सो वहाँ से इसको बोरो किया गया हुआ है. एंड सिटी मोड्स के लिए यू कंटिन्यू टू गेट दीज रोटरी डायल्स राइट हियर. एक चीज़ जो थोड़ी ऑकवर्डली इंटीग्रेट की गई हुई है इज़ द पोजीशन ऑफ द वायरलेस चार्जर राइट हियर. यहाँ पर आपको बिल्कुल बीच सेंट्रल कंसोल में वायरलेस चार्जर मिलता है, जो
टिपिकली हम यहाँ सेंट्रल कंसोल पे देखते हैं। नाउ पहले यहाँ पर आपके पास एक रिसेस होता था टू कीप योर बिन्स, कप होल्डर्स। अब आपको कप होल्डर्स सेंट्रल कंसोल में नहीं मिलते, बट यू हैव डिसेंट स्पेस इन दिस सेंट्रल कंसोल है। यहाँ पर आप वॉलेट जैसी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। सो यस, practical in those terms. But the highlight of this cabin remains this new 10.25-inch touchscreen. Comes with wireless Apple CarPlay, Android Auto and a host of connected car tech features. And अब आपको बिल्कुल नया digital instrument cluster भी मिलता है, which again looks quite nice. Second highlight for me is this steering wheel. काफ़ी प्रीमियम है होल्ड करने में. It's leather wrapped, flat bottom है, and you get this screen-like setup in the middle, जहाँ पे ये illuminated टाटा का लोगो भी देखने के लिए मिलता है. You still continue with all the controls, looks quite nice. And in the automatic आपको यहाँ पर ये पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं in the dual clutch automatic variant. So अब बात करते हैं पीछे की सीट के बारे में. अब अगर मैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की पीछे की सीट की बात करूँ, then the space remains the same as we have seen in the previous model, which is actually a good thing because knee room मेरे पास यहाँ पर adequate है and my seating position is quite comfortable because seat में यहाँ पर काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है. कुशनिंग भी सीट की काफ़ी अच्छी है and I have a good view right from here and from the rear seat as well. So overall hemmed in feel नहीं होता है, but the sense of space could have been enhanced अगर मेरे पास यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा, not even a panoramic but थोड़ा बड़ा sunroof होता. The sunroof is there but in terms of size थोड़ा सा वो small है. That's the only thing, but yeah, in terms of overall comfort, I think the rear seat is still quite comfortable and scores very well as far as the competition is concerned. यहाँ पर फीचर्स की अगर मैं और बात आपको बताऊँ, then JBL के सराउंड साउंड सिस्टम मिलते हैं अब आपको टाटा नेक्सॉन में. And in terms of more features, you have 6 airbags and you have a host of safety net inside this car, including ESC, that is electronic stability control. You have the dynamic control, traction control. So yes, in terms of safety, this car is obviously, it sets the benchmark still because 5 stars जो rating थी वो सबसे पहले हमने टाटा नेक्सॉन में देखी थी इस सेगमेंट में. और फीचर्स लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती. और फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते हैं एंड आपको यहाँ पर इनर रियर व्यू डिमिंग मिरर भी मिलता है जो ऑटो फंक्शन के साथ आता है, विच अगेन इज़ अ वेरी कूल फीचर टू हैव. और अगर फिर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको 382 लीटर्स का बूट स्पेस अब नेक्सॉन में मिलता है. Now when it comes to engine options, you continue with the same turbo petrol and the diesel engine options in the Tata Nexon Facelift as well. अब अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो similar 1.2 liter 3-cylinder turbo petrol unit you have here that belts out around 118 brake horsepower at 5,500 RPM and around 170 Newton meters of peak torque from 1700 to 4000 RPM. But gearbox options वो आपको पहले से ज़्यादा मिलते हैं. So you have the 5-speed manual transmission और AMT option अभी भी in the Nexon Facelift. But petrol के साथ you also get the dual clutch automatic transmission option now. So that again is something that has been carried over from the Tata Altroz. हमने DCA का option Tata Altroz में पहले देखा है, अब आपको Nexon में भी मिलता है. अब डीजल इंजन की पावर फिगर्स की बात करें, then the engine belts out 113 brake horsepower at 3,750 RPM and 260 Newton meters of peak torque at 1,500 to 2,750 RPM. And it is available with either a 6-speed manual transmission or an AMT automatic gearbox. And finally, when it comes to prices, then the Nexon Facelift is available in 4 variants: Smart, Pure, Creative and Fearless. These are called Personas and prices start at 8,10,000 rupees for the Smart Petrol variant. Smart Plus को 9,10,000 rupees पर प्राइस किया गया, while the Pure will cost you 9,70,000 rupees. Creative की प्राइस 11 लाख रुपीज़ है and Creative Plus will cost you 11,70,000 rupees. जो टॉप ऑफ द लाइन Fearless वेरिएंट है will cost you 12,50,000 rupees and the high end Fearless Plus will cost you 13 lakh rupees. Now सारी prices अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, but we still know the beginning price of petrol automatic variants. So AMT है that has been priced at 11,70,000 rupees for the Creative Persona, while the 1.2 liter petrol dual clutch automatic variant is priced at 13 lakh rupees for Creative. Now when it comes to diesel prices for manual transmission variant begin at 11 lakh rupees, while prices for diesel AMT begin at 13 lakh rupees.
So that was all the details on the Tata Nexon facelift. Let us know what do you think of this new car in the comments below, and our review will soon be live on the Park Plus app and on our YouTube channel. So stay tuned and keep following Park Plus for all the updates in the Indian car bazaar. I am Shubham Prasha signing off.